Good morning, everybody. Good morning, everyone. Am I audible and visible? Yes, you are. Yes, Misha. Okay. Thank you. Thank you so much for gathering on this lovely Saturday morning and being a part of this amazing session we are having right now. As we all know, this is a session, this is a season for contest in every club in Toastmasters right now. And we will be having our Kahaani contest next week. So to prepare us all, we have amongst us distinguished Toastmaster Avinash. Avinash Singh, distinguished Toastmaster, is the founder of Training Influence, coach and learning and development consultant. He has been a passionate Toastmasters for the past 6 years, winning many accolades, including 2 district championships, District 98 Humorous Speech Contest in 2020 and District 98 Table Topics Contest in 2022. He has been really kind to spare time from his busy schedule and come and share with us his knowledge and experience, which has helped him become an excellent speaker. Thank you so much for joining us. Without further much ado, I would now hand over the stage to our keynote speaker. Over to you, Toastmaster Avinash. Thank you, Toastmaster Visha. I hope I am audible and visible. Absolutely. Great, awesome. Today is Saturday morning and we are all here to learn more about Kahaani. So this session will be both in English and Hindi, English, so that you are able to prepare what exactly the requirements are with respect to the language part of it. So, आप सब तैयार हैं इस कहानी को शुरू करने के लिए? Yes. विशाल ऑलरेडी बीच में है, तो आप दोनों एक ही बीच में हैं क्या? Vishal or Dhirendra? Okay. And Misha is today all patriotic since 26, so great. Yeah, you're saying something? Vishal ke coconut trees are blazing actually. Mine is not. वो दूसरे end पे है शायद. Okay, so thank you so much for signing in and looking at this particular contest that we have, Kahaani, एक टोस्ट मास्टर की जुबानी. सबसे पहले बात करते हैं कि लैंग्वेज की. आपको क्या लगता है कि आपको हिंदी में करनी चाहिए? शुड यू प्रिपेयर इन इंग्लिश और इंग्लिश? ये सवाल आया होगा ना. वी आर ऑलवेज स्पीकिंग इन इंग्लिश इन टोस्ट मास्टर एंड सडनली देयर इज कहानी. क्या करें अभी? तो सडनली जब हम बात करने लगते हैं, मैं यूपी से हूँ, मेरा ओरिजिन उत्तर प्रदेश से है, तो मेरी हिंदी सटीक थी, अब मुंबईया हो चुकी है. अब मैं मेरे को बोलता हूं, मुझे नहीं बोलता. राइट? सो यू विल हैव टू डिसाइड व्हाट लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद. ये बहुत लोगों में आता है कि सडनली अरे हिंदी में करना है, चलो गूगल ट्रांसलेट यूज करते हैं, और गूगल ट्रांसलेट आपको एकदम मतलब इस कहानी की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं टाइप का हिंदी बताएगा. राइट? लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि आप जिस लैंग्वेज में, चाहे देखो अभी जिस लैंग्वेज बोल रहा हूं, जिस भाषा नहीं बोल रहा हूं मैं, राइट? तो अगर आपको इंग्लिश इस्तेमाल करनी है, हिंदी इस्तेमाल करनी है, इंग्लिश इफ यू वांट टू यूज, यू डिसाइड व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद. दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल अबाउट. बिकॉज कहानी अपने आप में, it's not about the language, it's about your emotions, it's about how you tell the story. Right? So let me ask you this. What are the elements you think of storytelling? What are the most important elements do you think are about storytelling, according to you? Suspense. Suspense. Good script. Or? Drama. Emotions. Emotions. Okay. धीरेंद्र कहा मैं सुन नहीं पाया. धीरेंद्र क्या बोले आप? Script. Script. अच्छा, script. हाँ, ठीक है. Script तो. I said drama. Characters. Awesome. ठीक है. So today, yeah. Bit humorous also means so that people. Humorous. देखिए, humor जो है ना, humor लोगों को लगता है, right? लोगों को लगता है कि हमको humor डालना ही चाहिए. See, humor is a skill. You are good at it if you practice it. You might not be that good at it if you don't practice it. You can get good at it. But if you are not
currently, then you can have a few things, but avoid करो. अगर नहीं हो रहा है तो कोशिश करने में फिर क्या होगा कि बात का बतंगड़ बन जाएगा, है ना? तो कोशिश कीजिए if you can, because see, humor is an element to engage people. It's not the means to an end. It will engage people, it will keep, and so does suspense, right? Suspense भी, thrillers भी होते हैं, उसमें maybe comedy नहीं होगी, but it can still engage people. So humor is not the most important element of a story, but if you can use it, it will engage people a lot more. That's what I wanted to say, right? So now you have given me so many things to work with, right? But today we are going to focus on 3 things and 3 things only. The first one, there are 3 C's which we will discuss. The C as in cat, okay, but the cat will not come into the picture today because we will talk more about the story. Okay. Have you heard about Ernest Hemingway? Ernest Hemingway के बारे में किसी राइटर थे, बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत. He is one of those writer of Moving Feast, I think. So there are many classics written by Ernest Hemingway, a lot of, and he is known to be one of the best ever, right? Now this particular short story has been dedicated to him, but nobody knows whether he has written it or not. They dedicated to him that okay, he must have written it, because जब भी वो story search करो आपको ये आता है. Now this is one of the world's shortest story. Okay? So you have 3 to 5 minutes, right? शुरुआत में contest में 3 to 5 minutes का story telling होता है, ठीक है? 2 to 4 minutes होगा, 3 to 5 minutes होगा, right? Depending on which stage you are. So club contest में you can, yeah, Sudha. I just wanted to tell you that you can even take us through the format. We are not familiar with the format. Okay. So no assumptions that we know anything about the Kahaani contest. No worries, no worries. Yes. See, format simple है. Format का आपको इतना ये करने की जरूरत नहीं है. मैं judging criteria आपको बता दूंगा. Format simple है. There is a club contest. Club contest होगा, उसके बाद area और इसमें जाएगा, ठीक है? There will be, see, इसमें main चीज ये है कि आपको club contest जीतना है, और इसका सबसे important पहलू या सबसे difficult पहलू है कि there is a social media round. आपने वो देखा होगा ना, India's Got Indian Idol, ये सब होता है ना, उसमें एक राउंड होता है ना जहां पे आपको लाइक्स बटोरने हैं. मेरा वीडियो है, मेरा राइट, सो मेरा वीडियो सोशल मीडिया पे जाएगा एंड आई हैव टू गेट पीपल टू लाइक द पेज, लाइक द ये, राइट? सो देयर इज अ सोशल मीडिया राउंड. तो it will also depend on how popular you are or how much likes you can get for your videos when you win the contest at the club level and go to the area and further. So there is a social media round. So that is one thing. Last time मेरा थोड़ा ये इसमें थोड़ा रह गया because maybe people, I don't know many people, so likes उतने बटोर नहीं पाया, और पैसे देके नहीं कर सकते हम लोग, so it's okay, right? नहीं मिलते हैं ना likes, ऐसे बादशाह ने किया था ना बहुत सारा, right? So you need to be aware. Judging criteria we will take it at the last last part of it, so that first let me tell you what storytelling is all about, and then the format and everything, it will be taken care of itself, right? So 3 to 5 minutes hai aapke paas, 3 से 5 minute, and 5.5 minute is what the timing is. Okay, so it's not a 5 to 7 minutes, it's a 3 to 5 minute speech, and again it shortens, right? More than a table topic or an evaluation, but less than a speech. Okay, it's more towards the tall tales ka duration, right? Now, do you think in 3 to 5 minutes you can have an impactful story and make an impact on the audience? 3 से 5 मिनट बहुत है story बोलने के लिए? I think we can impact the audience, but can we conclude the story? That is my biggest. Yeah, that's a challenge. Now, see. That's why I wanted to share about the shortest story. Now, see, impact depends on, now, when you talk about stories have different elements, and we will discuss about that. The impact which you need
stories are not speeches, mind you. Okay, so हमारे club में Mulund Toastmasters is conducting the contest today in the evening, and my mentees they gave me a nice version, but it was speech, it was not a story. Storytelling is a little bit different. So the कछुआ और खरगोश की story आपको पता है ना? So stories, moral होता है उसमें, सीख होती है, right? और characters होते हैं, you go through that flow. So we will discuss all that, but let me tell you that 3 to 5 minutes is more than enough to have an impactful story, because just let me give you an insight into one sentence shortest story with the biggest impact ever, right? So that I was telling you about Ernest Hemingway. Okay, so listen, ये English में लिखा है, तो listen to this sentence, right? And afterwards I'll ask you about the impact. Okay, now the story goes like this. This is just one sentence story. For sale, baby shoes never worn. For sale, baby shoes never worn. What do you, क्या आता है आपके दिमाग में ये सुन के? Parents don't have kids. I mean, the parents who don't have, I mean, not fortunate to have a baby. A stillborn. Parents who were supposed to have a baby and they had prepared for the baby, but sadly the baby couldn't be there to wear the shoes which they had bought for the baby to wear. Sad, है ना? Mine is yeah. Mine is a little bit philosophical. Maybe a person who didn't live his childhood to the fullest, probably. Yeah. Okay. So we will first take the philosophical is good, but the literal sense here is which hits. Stories are simple. एकदम hit किया ना कि मतलब humor नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे तुरंत वो लग गया कि क्या हुआ होगा. मतलब सडनली वो पेरेंट्स के चेहरे आपके दिमाग में आए होंगे और वो इमोशनल टर्मोइल, राइट? बच्चे के लिए हम लोग कितनी कोशिश किए और शायद तो आप किसी भी तरह से इसको देखें, इट्स अ वेरी सैड एंड गट रेंचिंग स्टोरी, राइट? लेकिन एक सेंटेंस है, सिर्फ एक सेंटेंस है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि अरे. Now let's go to another sentence, okay? And it has many elements. And this was given. I forgot the name of this actor director, and yesteryears के थे वो. And he had given this idea कि एक sentence में मैं आपको बहुत सारे elements of movies और बहुत सारे elements of storytelling बता सकता हूँ सिर्फ एक sentence में. Now this is the opposite of what we had already discussed, right? Now in this there are different elements, right? The sentence goes like this, again English में है. Oh God, my wife is going to have a baby. Oh God, my wife is going to have a baby. So what he tried to tell, oh God में क्या आ गया? Religion आ गया. हाँ, इसमें नहीं यूज कर सकते, but somewhere the faith, the religion, ये सब आ गया oh God में, right? My wife, उसमें क्या आ गया? Romance आ गया, love आ गया, सब कुछ आ गया, right? Is going to have a baby, thrill आ गया, right? And finally, suspense. Who's the father? Comedy है थोड़ा, right? So a little bit. Okay, so now again in one sentence, okay, there are so many things people think about, right? So stories need a lot of things, but it is not dependent on the duration. So first of all, I just wanted to clear that myth. लोगों के इसमें होता है कि अरे सिर्फ 2 मिनट है टेबल टॉपिक के लिए, 3 मिनट है इवैल्यूएशन के लिए, या 5 मिनट है स्टोरी टेलिंग के लिए. इट्स मोर देन इनफ.
राइट? यू जस्ट हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ योर सेंटेंसेस. एक एक सेंटेंस में वो पंच होना चाहिए जो आप इसको ये कर सकते. राइट नाउ there are 3 C's I said. The first C is characters. Okay, do you think characters are important in a story? आप नरेशन भी तो कर सकते हो. Characters important. क्यों important है characters? It So that the adds audience life. can relate. Character Visualization, maybe visual. a person is fat or, looking funny, so you can kind of visualize it. That helps the audience to connect, maybe. Yes, yes. So, whenever you narrate a story, स्टोरी टेलिंग, दादी नानी की कहानियां होती थी इस तरह से, मतलब ना अलग अलग आवाजों में, और अलग अलग आवाज तब आ सकते हैं जब बहुत कैरेक्टर्स हों उसमें. राइट? लेकिन मेन जो हमारे इसमें भी एक एलिमेंट है स्पीच टेलिंग में, विजुअल इमेजरी. तो जो विजुअल इमेजरी हमको क्रिएट करनी है लोगों के मन में, मतलब वो एक दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट हो जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए उसमें. राइट? सो कैरेक्टर्स are very important in your story. More than 2 to 3 characters will help you give the audience. और characters सिर्फ characters नहीं, उनके unique characteristics होने चाहिए, क्योंकि unique characteristics जो होते हैं ना वो याद रहते हैं. Now I am a big fan of the legend अमिताभ बच्चन. ठीक है, अमिताभ बच्चन सबको पता है ना, अमिताभ बच्चन. ठीक है, इंडिया में है तो पता रहेगा. ठीक है, so अमिताभ बच्चन in yesteryears he was the angry young man. मैंने उनकी अमर अकबर एंथनी और एक पिक्चर थी दीवार शायद, या अमर अकबर एंथनी तो मैंने कम से कम 30-35 बार देखी है. हाँ, क्योंकि तब तो और चॉइस नहीं थी ना, ओटीटी जैसा बहुत सारा. तो क्या अमिताभ बच्चन, यस. एंड शहंशाह देखिए, बहुत ज्यादा शहंशाह. राइट? शहंशाह में कैसा कैरेक्टर है? एक तो पुलिस ऑफिसर है जो करप्ट है एकदम, ठीक है, और ऑपोजिट एक विजिलेंटी है जो मतलब क्या क्या है, फांसी लेकर चलता है. ठीक है, और वो एकदम पूरा एक हाथ स्टील का, वो सारी चीजें चेन वेन है ना. राइट? एंग्री यंग. सो ये इमेज आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं. शहंशाह, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं. क्योंकि सवाल क्या पूछा गया था, आप कौन हो. राइटर का क्या दिमाग है, मतलब हाँ हो तो होते हैं. वाह. ठीक है, तो आपके कैरेक्टर्स जो है ना इस तरह से होने चाहिए. और इफ यू सी और जो कैरेक्टर्स है ना अमिताभ बच्चन के, अब इमोशंस भी आते हैं उसमें. ठीक है, सो लेट मी कंबाइन द फर्स्ट 2 पार्ट्स. ठीक है, द फर्स्ट सी वाज कैरेक्टर्स, द सेकेंड सी इज कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, चैलेंज कुछ होता है. कोई भी बड़ी स्टोरी होगी ना, या डेविड या गुलायत की स्टोरी ले लो, या कोई फेरी टेल ले लो, या कोई भी अच्छी मूवी ले लो, तो आपको दिखेगा ना उसमें बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंज होता है जो ये हीरो ना पार करता है, और फिर ही इज रिवॉर्ड. ओ क्या बात है भाई, मस्त किया. चाहे वो बाहुबली हो, बाहुबली का जब पार्ट 2 में उसका रिवील होता है कि राजा के राजा, एंड वो पूरा कटप्पा बोलता है उनके बारे में, सडनली यू फील ओ माय गॉड. तो इसमें ना इमोशंस भी बहुत है. राइट? सो फर्स्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट में सेटिंग भी होती है. ठीक है, कहां है प्लॉट, क्या है. सो शहंशाह में क्या प्लॉट है, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर रहता है, उसको करप्शन के चार्ज में लोग ये कर देते हैं. ठीक है, उसका बेटा आता है जो रिवेंज लेता है. राइट? और नॉर्मल इससे सिस्टम से नहीं जा पाता तो अगेंस्ट द सिस्टम जाता है और ऐसा. लेकिन आप देखोगे ना इमोशन कैसे लाता है इसमें. सबसे बढ़िया शहंशाह लोगों ने देखी है मेरे हिसाब से, नहीं देखी है तो एक बार देख लेना. ठीक है, आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर आप लास्ट का सीन देखोगे ना, जहां पे अमरीश पुरी लटक रहा है और शहंशाह ने उसको पकड़ा हुआ है. ठीक है, and he is telling about this great inspector श्रीवास्तव, ये रहा से. और फिर सस्पेंस, हम लोग सबको सस्पेंस पता है, लेकिन अमरीश पुरी को नहीं पता है, उसकी मां को नहीं पता है. और सबसे बढ़िया कैरेक्टर उसमें है ना प्राण.
वो बंदा इतना स्टॉन्च है एकदम, ये एक स्माइल नहीं, एक ये नहीं, और आपको लगता है कि यार इस कैरेक्टर ने अगर कुछ बोल दिया ना तो जबरदस्त, राइट। और जैसे ही वो बोलता है कि कौन हो तुम, कैसे तुम जानते हो ये सारी चीज, कौन हो तुम, तो वो बोलता है क्या, इंस्पेक्टर श्रीवास्तव का बेटा, इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, राइट। तो हाँ ये भी बोलता है शायद, पता नहीं, लेकिन द वे ही सेज, और ये इधर ना, इसके बाद क्या होता है, सीधा कैमरा कहां जाता है, प्राण और उसकी मां के ऊपर, सीधा उधर जाता है, और फिर बाद में क्या होता है, और एक हल्का सा प्राइड वाला स्माइल प्राण देता है। दैट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ दैट होल मूवी। मेरे को अमिताभ बच्चन जो भी करता है अंधेरी रातों में, आई डोंट केयर, बट दैट कैरेक्टर, वो जो प्राइड वाला स्माइल, अरे मैं जानता था, हाँ वो इसके जैसा नहीं, ये क्या बोलते हैं, चतुर के जैसा नहीं, मैं जानता तो तुमको एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वो वाला नहीं, जेन्युइन वाला, राइट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, राइट, व्हाट ही डिड, और अमिताभ बच्चन के मूवीज में ना एक मतलब ना 2-3 कैरेक्टराइजेशन होते थे, विधवा माँ अंधी बहन, या अंधी माँ विधवा बहन, वो इंटरचेंज होता रहता था, राइट। तो ऑलरेडी इमोशन आपका है ही, ठीक है। एंड देयर वाज दिस ग्रेट कैरेक्टर मदर इंडिया निरूपा रॉय, जो हर पिक्चर में अपने बच्चे खो देती थी, एंड आई डोंट नो व्हाई शी वाज मदर इंडिया, ठीक है। तो लेकिन दे पुट दैट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बाहुबली में भी कॉन्फ्लिक्ट है, दैट्स व्हाई इट्स अ बिग हिट। जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, उतनी बड़ी आपकी ओवरकमिंग द चैलेंज होगी, और उतना ज्यादा लोगों को मजा आए, राइट। सो कॉन्फ्लिक्ट में आपको सेटिंग करनी होगी कि किस समय की बात है, कहां की बात हो रही है, ठीक है, कौन से कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है थोड़ी, राइट। सो यू विल हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू टॉक अबाउट, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट स्टोरीज। And now you go to any movie, you get to any good stories, you will have 3 or 4 kinds of storylines. Okay, so एक लाइन होती है कि जो आपको मतलब ना रैग टू रिचेस, एक स्टोरी ऐसी टाइप की स्टोरी होगी, रैग्स टू रिचेस। बंदा कुछ नहीं था, अपने दम पे आज मेरे पास 5 फुट की कौड़ी भी नहीं है और मैं 5 लाख की बात कर सकता हूं, है ना ऐसा, मतलब बंदा कुछ भी नहीं है, and then he becomes something, right? So rags to riches stories, we all love underdog stories. Then you have the hero defeating the monster. कोई ये क्या बोलते हैं, KGF ले लो, या कोई भी मूवी जहां पे एक बहुत बड़ा विलन है या बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, अगर फेरी टेल है, एंड देन द हीरो डिफीट्स द मॉन्स्टर एंड वाओ गेट्स द गर्ल, व्हाटएवर, राइट। देन देयर इज ट्रेजर हंटिंग, क्वेस्ट फॉर ट्रेजर कहां मिले, कुछ भी, या तो कोई गोल हो बड़ा, या तो कोई एक्चुअल में ट्रेजर हो, तो ट्रेजर, क्वेस्ट फॉर ट्रेजर। एंड देन लास्ट इज वॉयेज ऑफ दैट हीरो, व्हेन ही कम्स बैक ही इज अ चेंज्ड मैन। पहले एकदम कुछ नहीं था और सडनली कोई रेवलेशन हुआ, बड़ी ट्रेजेडी हुई, एंड देन ही बिकम्स अ चेंज्ड मैन। सो ऑल दीज स्टोरीज रिलेट टू अस इन अ मच क्लोजर वे, है ना। So that's why when you talk about characters, conflict और challenge, आपको setting का ध्यान रखना होगा, characters क्या हैं, उसमें वो लोग visualize कर पा रहे हैं कि नहीं, unique characters, उनके characteristics, emotions आप ला रहे हो कि नहीं। शुरुआत में आप हंसी खुशी हो, and then suddenly challenge आता है, तो there is a lot of emotions, the sadness, the anguish, the anger, ये सारे इमोशंस अगर आप ला पा रहे हो, then your story will be impactful. And the final part of this is the climax part, right? कभी-कभी मूवीज जो होती है ना, शुरुआत अच्छी होती है लेकिन वो क्लाइमैक्स मजा नहीं आता, क्योंकि उसमें जो ट्रांजिशन है, जो विन है, वो अगर ठीक से नहीं आया, then the मतलब फिर आपकी स्टोरी फ्लैट पड़ जाएगी, राइट। ट्विस्ट हो सकता है, जैसे ह्यूमर में कोई भी चीज होती है वो ट्विस्ट की जाती है, दैट्स व्हाई वी क्रिएट ह्यूमर, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एंड, बट वो एंड आता है तो आपको अच्छा लगता है, कुछ अलग, राइट। सो दैट इज द क्लाइमैक्स पार्ट ऑफ इट। सो कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमैक्स आर द 3 C's which I wanted to share about. Okay, now
इफ यू सी अ स्टोरी, आपको क्या लगता है कि ये जो देखो, ये जो क्राइटेरिया है ना हमारा कॉन्टेस्ट का, इसमें ना आप 25% कोटेड मटेरियल यूज कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ओरिजिनल स्टोरी जस्ट समवेयर नियर, आप यू कैन टेक रेफरेंसेस, लेकिन आपको समवेयर आपका पर्सनल लाइफ में कोई स्टोरी बना सको या तो आपको बनानी होगी स्टोरी, और कोटेड मटेरियल 25% आप यूज कर सकते हो, दैट्स ओके, राइट। नाउ लेट मी गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल, ओके। हैव यू हर्ड अबाउट द यूनिबॉम्बर? यूनिबॉम्बर के बारे में सुना है? अमेरिकन हिस्ट्री में, अमेरिकन इसमें एक बंदा था जो ही वाज केमिस्ट्री का प्रोफेसर, राइट, और सडनली उसको मतलब ना ये कॉर्पोरेट्स और इस पे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो पोल्यूट कर रहे थे एनवायरनमेंट ऐसे। तो ये बंदा क्या किया, ये अपने घर से दूर रहने लगा एंड ही स्टार्टेड मेलिंग बॉम्ब्स स्पेशली इन बसेस, ओके। और उसका वो ये हो गया, तो वो यूनिबॉम्बर जो है वो बसेस को उड़ा देता था, ठीक है। बहुत सारा, बहुत बाद में पकड़ा गया वो, ठीक है। एंड मतलब कि यू विल नॉट एक्सपेक्ट अ टेन्योर्ड प्रोफेसर टू बी समवन लाइक अ टेररिस्ट, राइट, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी, ठीक है। तो मैंने वो एस्पेक्ट लिया यूनिबॉम्बर का, ठीक है। एंड आई विल टेल यू अ स्मॉल स्टोरी जो मैंने बनाई है, ठीक है। सो आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर, ओके, सो डोंट वरी। मैंने क्या बोलते हैं उस स्टोरी को एक अपना मेरे लाइफ में जो इंसिडेंट हुआ उसके हिसाब से मैंने बनाई है, ठीक है। सो इंग्लिश में है, लेकिन आई विल ट्राई, मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है। हिंदी में ज्यादा इजी रहेगा, इंग्लिश, राइट, ओके। शुरू करते हैं, राइट। 2-3 मिनट में स्टोरी हो जाएगी, 2 मिनट में, राइट। हेलीकॉप्टर्स की आवाज, शहंशाह खड़ा था, वो यूनिबॉम्बर जिसको लोग सदियों से पकड़ना चाहते थे, वो बेड़ियों में जकड़ा गया था। चारों ओर पुलिस के सायरन, एम्बुलेंस, और लोगों में एक उत्साह, एक चैन की सांस कि अरे अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे, यूनिबॉम्बर, शहंशाह पकड़ा गया, शहंशाह पकड़ा गया। शहंशाह चल रहा है धीरे धीरे पुलिस की गाड़ी की तरफ, धीरे धीरे, और सारे ख्याल उसके जो दिमाग में चल रहे हैं, अचानक से उसको ये चीज महसूस होती है कि अब तो फांसी लगेगी। और फिर वो उस इंसिडेंट की तरफ पहुंचता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी चेंज कर दी। वो 10 साल का था, अपनी मां के साथ बस में जा रहा था, और वो बहुत ही कमजोर हुआ करता था, बात बात में बेहोश हो जाता था क्योंकि खाना में सिर्फ उसको दाल चावल पसंद था, तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन उसमें था नहीं, और इसलिए उसको कभी कभी ऐसे चक्कर आता था। मां के साथ जा रहा था और बस में भी उसको चक्कर आने लगा। बस पूरी खचाखच भरी हुई थी, पूरी भरी हुई थी खचाखच। और उसकी मां ने जैसे ही देखा, वो लोगों से मिन्नतें करने लगी कि मेरी बच्ची को चक्कर आ रहा है, प्लीज उसको बैठने के लिए जगह दे दो, उसको थोड़ा पानी दे दो, बैठने। लेकिन लोग टस से मस नहीं हुए, किसी ने उस लड़के को जगह नहीं दी। वो जमीन पर बैठ गया, लेकिन लोग ख्याल नहीं दिया। उसकी मां ने कोशिश करके बस से बच्चे को उतार लिया और वहीं पे एक स्टॉल से पानी पिलाया, और उसकी जान में जान आई। उसको छेनू बुलाया करते थे बचपन में, लेकिन वो छेनू शहंशाह तब बना क्योंकि तब उसको ये ज्ञात हुआ कि ये दुनिया जो है ना, ये मतलबी है और इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। एक बच्चा जो तड़प रहा था, एक सीट तो मांगी थी, और तब से वो कहानी शुरू हुई उसकी
और वो हर बस को तहस नहस करना चाहता था और वो बम बसों में ज्यादा फोड़ने लगा। वो जो माहौल था जिसने उसको छेनों से शहंशाह बनाया, वो बार बार याद आ रहा था। और अचानक एक जोर से आवाज आई, पै 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 पै। अलार्म था। शहंशाह की आंख खुली। वो एक बहुत से बड़े बड़े महल में, महल जैसा घर था, उसमें बैठा हुआ था। कोई पुलिस की सायरन, कुछ नहीं था वहां पर। शहंशाह एक बहुत ही बड़ा राइटर था और उसने बहुत सारी कहानियां लिखी थी और बहुत ही ज्यादा लोगों की मदद की थी। और शहंशाह तब सोच रहा था कि अरे, उस वक्त जब ये घटना घटी, मैंने ये सोचा कि लोगों को एम्पैथी की जरूरत है, लोगों को सहानुभूति की जरूरत है, ये लोगों में होनी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा उस राह पर नहीं जाए जिस राह पर शहंशाह चल सकता था और वो यूं में बॉम्बर बन सकता था। लेकिन उस समय वास्तव में यह हुआ कि छेनू ने यह डिसाइड किया कि नहीं, लोगों को हम बदल सकते हैं अपने एग्जाम्पल से, और वो एक अच्छा व्यक्ति बन गया। तो ये कहानी का आशय ये है कि एक इंसिडेंट आपको चेंज कर सकता है, लेकिन आपके दिमाग में ये चॉइस होती है कि आपको किस राह पर जाना है। यू कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, द चॉइस इज योर्स। सो नाउ व्हाट डिड आई डू? मैंने दो स्टोरी, ये स्टोरी एक्चुअली थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं बचपन में बहुत ही, अभी तो मस्त एकदम हट्टा कट्टा हो गया हूं, लेकिन बचपन में थोड़ा मुझे चक्कर आता था, राइट, क्योंकि मैं सिर्फ दाल चावल खाता था, राइट। सो ये एक्चुअल में घटना हुई थी, जो किसी ने सीट नहीं दी और मेरे को लग रहा था सबको पीटो पकड़ के। 10 साल का था, नहीं पीट पाया, राइट। तो वो मैंने लिया इंसिडेंट, ये लिया और इसको एक कहानी के रूप में शेयर किया, एंड इट हैड अ मॉरल, राइट। सो यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस, टेकिंग ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन आप ले सकते हो। सी, एकदम एग्जैक्टली नहीं था, कुछ भी नहीं था, 25% से भी मेरी कहानी एकदम यूनिक थी, राइट। सो यू कैन क्रिएट सच स्टोरीज, right? So my time is up with respect to the session part of it, and I feel that you have got some idea. For work on the characters, उसको यूनिक बनाओ, उसके इमोशंस, डायलॉग्स होने चाहिए, स्टोरी, so that people can picturize the setting, the plot. Okay, there should be a big conflict, okay, and final climax और ending में story का moral. What is the learning? सीख क्या है story? Yeah? Right? So this is something which I wanted to share with you. I have 5 minutes for question and answer if you want to ask anything, so that we can clarify a few things, and I'll be more than happy to see. 30 minutes mein itna hi ho paya, I'm sorry, but I think you got something out of this particular thing, right? Yeah, Sudha, go ahead. So my question is, thanks, Avinash. It was a wonderful capsuling of everything. I think the format as well as how it's done, and even a live demonstration. So thank you so much for that, with that less of time constraint that you had. So basically, my question is, how much time do you get to prepare it? Do you give, are the contestants given the topic much ahead in advance? How does it happen? I've not done a Kahaani before. That's why I'm asking. No, Thank it's you. upon you. It's upon you. There is no. So you can prepare yourself and come accordingly. Is that what it is? It's like a speech contest. You have your own perfect. concept, your own story, your own. It just needs to be Got it. and better than others. Got it. Got it. So then we have enough time to let our creativity flow and get the best combo of whatever you said, the 3 C's, right? So that's a good thing. And lastly, there is also the team concept, which I read somewhere. So how does a team part work? There are some 4 people in a team or something like that. Kahaani is different. IPL is different. Okay, IPL is a team based. Kahaani is not team based. It's individual.
Kahaani is individual, right? So Okay. IPL is team-based, that is TT. So at club level, you will have a normal TT contest, and at the area division level, then they will make a team according to the division, and the division director will be the captain of the team, right? And then they will fight. Okay. I got it. And the last question is that do you have any negative marks if you speak more in English than in Hindi? No, language is no Because barrier. Language is no barrier. You no can. barrier. The only thing is that आप audience को देखो. आपकी audience हिंदी जी, समझती है समझ अच्छे से, right? English समझती है. जैसी audience है उस तरह का language आप use करो तो that will. I'll just quickly tell you about the judging criteria. Concept Yes, जो है please. आपका. Concept जो है there are 6 different criteria. The first is concept. 10 mark है concept के लिए. Character building में 15 mark है. नैरेटिव कैसे आप कहानी को ले जाते हो उसमें 30 मार्क है. वॉइस, बॉडी और अगर प्रॉप्स आपको यूज करने हैं तो उसके लिए 20 मार्क है. क्लाइमैक्स के लिए 15 मार्क है और एंडिंग के लिए 10 मार्क है, राइट? सो there is a mail sent to everyone. If you have not got it, Sudha, I will send it to you again. Okay, उसमें पूरा criteria है. You can send it to everybody so that they are prepared with respect to Yes, how please. it's supposed to be. Yes, please. I'll share it with you, right? Okay. Yeah, Rakesh, you had a question. No, I think Sudha has correctly asked the right question on, whether it's going to be an impromptu or not. So that is answered because that's what even my assumption was, that it is an impromptu. But thank you. Preparation. It's like a speech preparation. Okay. But it's a storytelling thing, right? In speech, it's a discourse. You explain something. In story, you just share the whole incident. And at the last thing, you can just give a short, learning or moral. इससे हमें ये पता चला. It has to be there. So basically, it's not just narrating your own story with context, with climax, and then with the conclusion, but there has to be some kind of a takeaway, basically, for Yes. your Necessary. A learning, a takeaway, a message, whatever you can say, a moral, whatever, because storytelling is all about learning something out of this, getting a takeaway. And what is the theme? I mean, where you will be scored higher? For example, should you bring in some kind of a humor, or should it be more? There is no marks on humor part of it. It's all storytelling. So humor is not a criteria. Okay, so it can be a gut-wrenching story. It can be all emotional. But let me tell you this. Okay, a small thing which I have learned: audiences don't like sad endings. Okay, so always end on a positive note. कभी भी मतलब ना आपके स्टोरी में उतार चढ़ाव हो सकते हैं. There can be happiness, there can be a big tragedy in between, and then you take it up again. Give hope to the audience. अगर आप लास्ट में होप नहीं दोगे ना ऑडियंस को, तो आपकी स्टोरी उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी. Always, even in a dystopian world, there is still some iota of hope. अगर वो hope नहीं दोगे, then so always end on a positive note. That's one thing which you can work on. Yeah, and again, sorry for being redundant, but I think this question was also asked, but just to re-clarify, the language is not a concern here, and I can choose to speak as a combination of both the languages or either of the languages, right? Yes. Yes. See, the main criteria is that, if I start speaking Shuddha Hindi, maybe some of the words the audience might not understand. But it's not about the language, it's about the emotion. It's how your expressions come, what kind of body language you use, how do you use your vocal variety. Vocal varieties and body language is very important in storytelling. That's true. तो कभी मैंने अमिताभ बच्चन की आवाज निकाली या फिर मतलब ना नॉर्मल अपने इस पे आया, तो there is a difference. So you need to give your characters unique voices, unique characteristics. Character building आप करोगे, then it will help you to have that impact. No, I think you gave the right example, Amitabh Bachchan, because I was going to allude to that, because he's one person who can speak, impeccable Hindi and English both, right? So that is one person who I really admire as well. Prime Minister Modi also is a fantastic speaker, but that's only one form of the language, not the second. Yes. So, yeah. If we have to be like Amitabh Bachchan.
I would say. No, you be like Rakesh and give us an original story. Definitely. I will try to, I aspire to be like him, but yeah, I will try to be my original self. Yes. Yeah. Sarika, last question. I'll take this last question. I have to rush to my own meeting, which is a milestone meeting. So, yeah, it will not. I'm just again reconfirming. My only point was that it can be just there is no story. I mean, it has to be a story, but it isn't that it has to be any. It can be any criminal or dramatic, anything, emotional, humor, anything of our choice. Okay. Anything. It should be a story. See, it should not be a speech. There is a difference between a speech and a story, because story will have characters. Once upon a time, एक समय की बात है, ऐसे हुआ था, 16 साल का बच्चा था, right? क्या मैंने कैसे किया, शहंशाह खड़ा हुआ था और वो सोच रहा था. तो मैं I don't give the context. I straight away jump into the story. I start narrating it, and eventually at the end I give the moral or the learning, or what. So narration is very important in that. It should not be a speech. It should be a story. Just take care of that. Got it. Thanks. Okay. So in last year, I had used this story about this lady from South, I believe Tamil Nadu. She sells 1 rupee idlis. Okay, and Mr. Anand Mahindra had given the whole. She didn't charge more than a rupee for an idli plate, right? So I taken. And she's been given some cloud chicken kitchen or something, and she's been able to. Yes. Yeah, Yes. I read that. Yeah. And she is so old, and she's still continuing that because that is how she is. She is very altruistic, and she wants no one to go hungry, right? So मैंने इसको थोड़ा चेंज करके बनाया था इडली वाली नानी. ठीक है, और इडली वाली नानी के बारे में मैंने ये पूरी कहानी बोली थी. ये लास्ट में, मतलब ना लास्ट ईयर का ये मैंने किया था, राइट? सो अगेन I had taken some inspiration and I had converted it. Okay, last year criteria इतने stringent नहीं थे, 25% ये सब नहीं था. कुछ भी स्टोरी, कोई भी आप खरगोश और कछुए की भी स्टोरी ऐसे हूबहू बोल सकते हो, वो भी कहानी है, राइट? बट यहाँ in this context you will need to have somewhat an original story. So थोड़ा क्रिएटिविटी यूज करो, थोड़ा उसको चेंज करो अपने हिसाब से, ठीक है? बॉलीवुड करता है ना, पहले क्या बोलते हैं, इंग्लिश हम लोग ने कॉपी किया और अपना बनाया, अभी साउथ कॉपी कर रहे हैं और अपना बना रहे हैं. तो वी कैन ऑलवेज हैव अ रीमेक ऑफ थिंग्स, रीहैश थिंग्स, if you are not able to think a lot, right? If you can think of original creative story, nothing better than that, right? Okay, so thank you so much. I have to rush. I would have loved to speak more, but I hope you got something out of it. I am available throughout this week if you want to consult or if you want to connect with me personally. I'll be more than happy to help you personally. So thank you so much for this opportunity, Toastmaster Mesha, and I really love this. I love to speak. So thank you so much. Thank you so much, Avinash. This was a wonderful session. To be honest, we were gripped to our seats. मतलब आपने बांध के रखा है हम सबको शुरुआत से अंत तक, तो बहुत अच्छा लगा. And I'd also like to speak in Hindi. आपको देख के मुझे और अच्छा लग रहा है. और जो आपकी तकलीफ हुई है ना हिंदी खराब होने की, वो मेरी भी हुई है. मैं भी यहाँ की नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मेरी भी हिंदी अलग है, पर यहाँ के मेरे को गया रहेगा. I talk that way. तो मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ एक ही है, पर बहुत अच्छा लगा. आपने इतने अच्छे से सब कुछ बताया है, हमें बहुत कुछ सीखने मिला है. और मुझे सच में मैं चाह रही थी कि आप थोड़ा और रहें. Like had you stayed longer, we would have learned a lot from you. And to be honest, would love to have you more, like for further sessions. So please do make yourself available so that you can come and teach all of us a lot of many things, because we are we are budding Toastmasters, and it is always nice to have veteran Toastmasters like you who are coming and sharing. And it was not just coming and sharing, it was like you were actually like आपके साथ हम जी रहे थे वो हर चीज, वो छोटा लड़का, वो कहानी, तो बहुत बहुत अच्छा लगा. And thank you so much. Like, I'm eternally grateful to you, and I'm sure everybody agrees with me. You actually refreshed our morning, Saturday morning.
कोई इतना enthusiastically, इतना positively आके बात करता है तो पूरा दिन बन जाता है. So you have that vibe in you, and thank you so much. Like, Pleasure. I'm really, really thankful to you. You have Pleasure. been very, very kind. Thank you so much. See you guys. Thank you so much. All the best for the contest. See you Thank next. you. Bye. Thank you. Bye. Thanks, Thank you. Avinash. Thank you. Avinash. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Well done. I mean, Nisha, so we at least now know what we have to do in the contest, how the contest is going to be like. ma'am. I was planning to do a demo of the meeting after the session, but because it's a prepared session, I don't think we'll be able to do justice to having a dry run on this. What do you guys think? Ma'am, if everybody is available, we can do it next Saturday before the Sunday's meeting. So by that time, everybody will have prepared something or the other. तो एक मॉक रन कर सकते हैं अगर सब अवेलेबल रहेंगे तो एक प्रैक्टिस सेशन एक रिहर्सल हो जाएगी संडे को क्योंकि हमारा कॉन्टेस्ट है वी आर हैविंग अ कॉन्टेस्ट दिस संडे. So we have one full week and Saturday we can do if possible. Yeah, that will be a good idea. First of all, Tanmay, let's Tanmay and Dhirendra, let's take the polls and the Google form information and for registration of the participants for the contest. And then I think the conducting of the contest also we need to prepare ourselves because timer, where we'll need a SA, we'll need a Zoom master. So that preparation will have to go on in the background. And what we will need to do is once we have the participants, we'll have to probably also get the judges. Now the judges will have to be arranged from outside. So all these things need to be done. So we can discuss this offline, but I think the most important thing right now for all the people who attended, I hope you all are going to participate in this. See, it doesn't matter, you know, whether we win, lose, but look at the opportunity for us to be able to bring out the best in this on this topic, because one is the language, then it's about story. It's you have enough and more time to prepare for it, and also to bring up any combos, right? Like how did he do the shercha? And he mixed it with the idli woman. I mean, you can think of so many things that you see on a day-to-day basis, and you can try and combine it. So I think let's not stay back. Let all of us participate. This is my verdict to everyone. If everyone, whatever it is, we are all here to support each other. We are not going to be saying, oh, this, that, and the other. We all support each other. So it will be a great place for us to experiment. So karte hai. This is my suggestion to everyone. Please register and let's have a demo mock run on Saturday so that we know where we stand, and then we get on to the contest on Sunday. Right, Misha? What do you think? Absolutely. We can run polls so that we can know the attendance. So we can then prepare and mock run ho jayega to thoda confidence bhi aa jayega. So it's nice to have a mock run actually. So can I hear something from the participants? I mean, the people out here, Shreyans, Rakesh. Yes, it's completely fine. Walter. ठीक है ये practice जरूरी है actually. Good suggestion. Great. Okay, so then we'll call it a close for the meeting today then, right? Because I don't think we can do the demo run. So let's get back. Sorry to interrupt. I just wanted to ask, there will be a Google form for the contest. Yes, so you will be sharing it on the. Okay, thanks. Yes, we will be sharing 2 to 3 Google forms, 2 forms for sure. So one will be the participation form for the contest, and other will be a personal form, which will be for the members of the group. So I urge you to fill both the forms and submit it as soon as possible. And just keep a track of all the messages. Just keep reading the messages because we'll be updating everything on the group. Okay. And if anything if you have a problem in anything, you just can reach out to us. Okay. But please fill the forms and
make sure that you have registered for the contest. Sounds This good. is also a good time, Sounds Misha, good. to the sleeping members to make them active and try and talk to them and tell them that there's a contest and please participate. Yes, Sarika. Great then, guys. Have a good weekend, and I think the XCOM will communicate on tomorrow's meeting, which might be doubtful because all of us are attending the TLTP session tomorrow. That's why we thought of having this Toastmasters meeting today, so that at least we connect with our members on an educational session. Right, Yes, Misha? ma'am. Yes, ma'am. Absolutely. You can put that note on the group, I will, XCOM ma'am. group. Sure, ma'am. Okay, Yes, great. ma'am. Have a great Thank you weekend, so much, guys. everybody, for joining. Yeah, thank you. Bye. Thank you, Bye-bye. everyone. Thank you. Thank you, Bye-bye, everyone. everyone.